आज का टॉपिक है कमेंट अपॉन इनवर्टिब्रेट प्लस वर्टिब्रेट स्पॉट्स। मतलब आपको इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में से स्पॉटिंग दिया जाएगा, जिसमें से आपको कमेंट लिखना है और उसका डायग्राम बनाना है। यूजुअली स्टूडेंट्स करते क्या है, चाहे तो खाली कमेंट लिख देंगे, डायग्राम छोड़ देंगे, या डायग्राम लिख देंगे, कमेंट छोड़ देंगे। इसलिए आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर आप 4 ही लिखिए, 5 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए और उसके बाद उसका डायग्राम बनाइए, तब इस पर मार्क्स मिलता है। तो इसमें मैंने कुछ कोशिश किया है। पहला है एस्टेरियाज, स्टारफिश। ये डायग्राम है। ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, क्लास एस्टेरॉइडिया, ऑर्डर फॉर्सिपुलेटिडा, फैमिली एस्टेरिडी, जीनस एस्टेरियास। इसका जनरल कैरेक्टर, ये जनरल कैरेक्टर जो है आपको 3-4 लिखना है, जिसको आप इजीली विजिबल कर रहे हैं वहां पे। दे हैव 5 रेडिएटिंग आर्म, जैसा कि ऊपर के डायग्राम में दिखाया मैंने। ये 5 रेडिएटिंग आर्म है, जस्ट लाइक स्टार, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टारफिश। 1 2 3 4 and 5. The next point is water vascular system present and helps in locomotion, food capturing at attachment. चूंकि water vascular system is the characteristic feature of phylum Echinodermata, तो ये चूंकि एकाइनोडर्म्स है इसलिए प्रेजेंट है। अब इसका काम क्या है? लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग एंड अटैचमेंट। लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग एंड अटैचमेंट। लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग, forceps-like structures called pedicellary help to clean debris on the surface of the body. ये pedicellary is the characteristic feature of phylum Echinodermata. ये एक forceps-like structure होता है, चिमटा जैसा, जो करता क्या है कि इसके बॉडी के ऊपर जो भी डेब्रिस है उसको ये क्लीन करता है। The next one is Madreporite is present between 2 arms of the 5 arms, which helps in drawing water, drawing water into the body. Madreporite ये एक पोर है जो 2 आर्म के बीच में होता है और इसका काम है पानी को चूसना। Development is indirect through free swimming larva. All are marine. Excretory system absent. Now the next slide is sexual dimorphism in Ascaris. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं जहां मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है, उसको हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम नेमेटोडा, क्लास क्रोमाडोरिया और एस्केरिडीडा, ऑर्डर फैमिली एस्केरिडीडी, and genus is Ascaris, and species is Lumbricoids. Now come to the general character. General character is just like diagram. This is the female and this is the male. The basic character is male is slightly thicker, female yes, and female is not. And the male has curved tail with 2 pineal setae, and here is a cloacal aperture, and here is a anus. These are the sexual dimorphism that you can be able to distinguish between male and female Ascaris. Ascaris is a yellowish white or pinkish worm. ये देख करके आप पता लगा सकते हैं। The epidermis is the outermost syncytial layer that covers the cuticle. Syncytial means multinucleate. The cuticle is a transparent, thick and non-cellular layer secreted by the epidermis. यानी क्यूटिकल जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, चूंकि ये पैरासिटिक है
इसीलिए द बॉडी इज elongated, cylindrical, unsegmented and bilaterally symmetrical. Female female is longer and thicker than male, and the tail end of male is curved with pineal setae, but of female is pointed. Four longitudinal lines, these are the important characteristic features, are present in both males and females, जिसमें दो lateral, one ventral and one dorsal. दो lateral मीन्स इसको हम इस तरह से भी फॉर्मूला के तौर पर लिख सकते हैं 2L प्लस 1V प्लस 1D. दो 2L means two lateral, 1V means one ventral, plus 1D means dorsal line. The mouth is guarded by three lips, two subventral, three lips. This point is very important. This point is very important. Three lips, two subventral and one dorsal. Mouth has three lips. They show characteristic S-like locomotion. Now the third is tapeworm. Systematic position, scientific name Taenia, kingdom Animalia, phylum Platyhelminthes, class Cestoda, order Tenuidea, genus Taenia, species Solium. ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्कॉलेक्स है, हेड ऑफ द, और ये द होल बॉडी इज सेगमेंटेड, द होल बॉडी इज सेगमेंटेड एंड ईच सेगमेंट इज कॉल्ड प्रोग्लोटिड्स. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बॉडी सेगमेंट है और यहाँ तक ये सब सेगमेंटेड है और बायलैटरल सिमेट्री है. इसमें ये दो अलग किस्म का है. commonly called as pork tapeworm. Body is dorso-ventrally flattened, segmented. Segmentation in tapeworm shows pseudo-metamerism. Body is divided into three regions: head या scolex, neck and strobila. Strobila segments are called proglottids. They are hermaphrodite, means male and female सब एक ही में होता है. They live as an intestinal parasites in many animals. Beak-like projection on the head carrying hooklets, rostellum. Each proglottids is a functional unit or complete unit of tapeworm. Most of them are harmful parasites. जैसा कि आपने यहाँ पर डायग्राम में देखा, ये जो बीक लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये हुकलेट्स है, टू रोज ऑफ हुकलेट्स, और ये जो सेंट्रल पोजीशन है इसी को हम रोस्टेलम कहते हैं, जिसमें चारों तरफ हुकलेट्स है. और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सकर्स है, इसी के जरिए ये होस्ट से चिपकता है, होस्ट से ये चिपकता है. Now the next is metamorphosis in metamorphosis in frog. Metamorphosis is a similar process happens with the gills which disappear as the tadpole begins to develop air breathing lungs. यानी aquatic life से
टेरेस्टेरियल लाइफ की तरफ जब मूव करता है तो इसके अंदर गिल्स डिसअपियर हो जाता है, लंग्स डेवलप हो जाता है. Tadpoles, by using the process of apoptosis, apoptosis means programmed cell death, order the cells they do not need anymore to share their DNA and die. उन्होंने कहा, वो कहता है कि अब आपकी जरूरत नहीं है, आप आपके पास जो डीएनए है उसको शेयर कीजिए और मर जाइए. The dead cells are then cannibalized for energy and raw materials to make other cells. यानी उसको खा लिया जाता है ताकि एनर्जी मिले. The cells of their tails are broken down and used to make their developing legs. Metamorphosis dramatically increases the possibility for adaptability and development. जाहिर सी बात है, पहले एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ था, अब एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ से वो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में आया. तो इसके मेटामॉर्फोसिस में बहुत सारे ऑर्गन्स न्यूली डेवलप्ड होता है, पुराने ऑर्गन्स डिसअपियर होता है, और इस तरह से इसी को एक स्टेज से एक मोर एडेप्टिव स्टेज में पहुंचता है, इसलिए इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. आइडोथायरोनिन, दिस इज वन ऑफ द थायरोक्सिन ग्रुप. प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन्स आर कंट्रोल दिस प्रोसेस इन फ्रॉग्स. मतलब मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय these three hormones. These three hormones, that is prolactin in frog, in case of frog, and thyroxine. Tadpole constitutes the second stage of the frog life cycle. The morphological characters of a tadpole comprises of rudimentary gills, a mouth and a long tail. ये डायग्रामेटिक स्टेज है, ये पूरा दिखा रहा है. Now the next is retrogressive metamorphosis. Retrogressive metamorphosis in Hardmania. Larvae attaches to the substratum with the help of chinwards, head downwards and tail upwards. Rapid growth takes place between the chinwards adhesive papillae. Chinwards means adhesive papillae, and mouth, and almost no growth on the opposite side of the body. Due to rapid growth on one side, body starts rotating in such a way that mouth gradually migrates to the upper side. Meanwhile, pharynx enlarges and stigmata increases in numbers. Intestine becomes functional and atrial opening is formed on the opposite side of oral aperture. Both tail and notochord are gradually absorbed in the body during metamorphosis. The hollow nerve cord is reduced into a solid nerve ganglion on the dorsal side. Sense organs, namely ocellus and statocyst, are lost. Heart is on the ventral side of gut but is non-functional. Only two pairs of gill slits in pharynx are present, and this is the retrogressive metamorphosis in the diagram. I hope that this lecture will be fruitful for you, and you will be like it, share it and subscribe it. Thank you.